Hey, you narrated the question wrongly the other day. I feel so Sir, angry. it was X on the sides. Not side, x to the power है वो, अच्छे से देखो. I solved it also In immediately. the PDF, it was X beside that. PDF is that of the book only. You read it wrong. So after going home, I solved it. I kept it also. Chalo. So today we will conclude the chapter and we study something called circular motion. Very, very short form of the chapter is mentioned out here, whether you are an old course or a new course. Circular motion is dealt in detail in grade 11. बट टू अंडरस्टैंड सर्कुलर मोशन डिटेल थोड़ा बेसिक्स यहाँ पे पढ़ाएगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है. ठीक है. सो शैल वी स्टार्ट? वेरी गुड. And after that we'll do a quick revision of the chapter. Okay, circular motion. Now so far what we were studying about the chapter called uniformly accelerated motion in a straight line. So we were having Suvat equation, S was their displacement. Now you have already heard this is circular. So motion is not going to be in a straight line, motion is going to be in a circle. So what are the parameters of a circle? Let us see. If somebody asks you to draw a circle, what is the basic necessity you need? Sir, what is the center? Compass. What is the center of the circle and how much is the radius of the circle? These are the two things that you need. So you need a center and you need the radius of the circle. Let's say the radius of the circle is denoted by r, right? Now if a body moves and then this sort of a circumference I will call as circular path, right? In the initial discussions we had paths which were linear. Now our path will be, no, it's all right, our path will be circular. Is this clear? So circular path means a path which looks like a circle, has a radius and has a center. Now our body, say this is a body B, this body B is moving around in the circle. Okay? What are the new things that we get to know? So this sort of a motion is called circular motion, and if this circular motion is around this can be also considered as a rotational motion also. ठीक है. रोटेशनल और सर्कुलर में क्या डिफरेंस है? रोटेशन इज व्हेन द बॉडी मूव्स अबाउट इट्स एक्सिस. ये सब आप 11 में पढ़ेंगे. द अर्थ हैज गॉट टू टाइप ऑफ मोशन, rotational motion around its axis and a circular motion. Though the earth moves in an ellipse, all derivations that you will do in gravitation in grade 11 will be taking the path as circle. Ellipse, earth's orbit is actually elliptical. Rotation और circular में समझ में आया? ये फैन देखो, ये फैन अभी जो घूम रहा है ना, that is called a rotational motion. If you look at the axis, इस axis के ऊपर ये blades घूम रहे हैं. But if you put a star on one of the blade, then that star is having a circular motion. Are you trying to get the difference? This is rotational motion. But if I put fans on it and a point out here, although this rotational motion is right on the axis, and this body is on a circular motion. ठीक है? तो circular motion में हमारे पास एक radius होना चाहिए. So first thing will come length of the circular path. Length of circular path. What should be the length of the circular path? 2 times pi into r, which is the circumference. Any doubt? Length of the circular path will be always 2 times pi into r. 2 pi r is the circumference of a circle. Now we need to observe the motion of this body. अब ये body के motion को देखेंगे. मान लो यहाँ पे एक body है, ठीक है? Now there are many interesting things about here. Now say the body is at a position p1 now and the body is at a position p2 right now. Now if you observe the velocity of the body, okay, if you observe the velocity, तो velocity के क्या क्या parameters होते हैं बेटा? एक होता है magnitude, another होता है direction. In this chapter we will be very much concentrating on direction. Right now at p1 the direction of this body is said to be the tangent to p1. Tangent means tangent. Do you know what is a tangent? शायद नहीं पढ़े हो अभी. अब tangent देखते हैं पहले. Tangent is a line which touches a circle just at one point. This is called tangent. And if a line touches a circle in 2 points, then this is known as a secant. इसको हम secant बोलते हैं, इसको हम tangent बोलते हैं. Tangent मतलब सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जाएगा, only at one point. That's why sometimes when people talk, we say, अरे पता नहीं वो क्या बात करता है, ही तो just tangent में कुछ एक बात कर देता है. मतलब एक पॉइंट पे टच करके जाना. Have you understood? This is called tangent. And in every point you can have different tangents. यहाँ पे ये tangent होगा, यहाँ पे आपको tangent बनाना है तो ये tangent होगा. Is the concept of tangent clear? So when we see the direction of velocity, the direction of velocity at point p1 is the tangent at p1. ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है. अभी एक एग्जांपल देगा, फटाक से समझ में आ जाएगा.
ऑल दीज गर्ल्स में जैसे जैसे फोक डांस हो गया, ऐसे आप पकड़ के घूमते हो ना ट्र करके, और टू गर्ल्स होल्डिंग हैंड्स टुगेदर एंड दे कीप ऑन रोटेटिंग। वहां पे एक लड़की बदमाशी करके अगर हाथ टक करके छोड़ दिया ना, सपोज दिस इज द गर्ल, यू फील दैट शी विल बी रोटेटिंग इन सर्कल, छिटक के सीधा गिरेगी ऐसे। डिस्कस थ्रो देखा है एथलेटिक्स में, हाउ डज इट डिस्कस थ्रो टेक प्लेस? फर्स्ट ऑफ ऑल द गाय विल बिल्ड हिज मोमेंटम ऐसे ऐसे करके, देन ही ट्विस्ट्स अराउंड द एक्सिस, घूमता है, घूम के ऐसे फेंक देता है, ही इज इन अ सर्कल एंड ही रिलीजेस लाइक दैट, द डिस्कस जस्ट फ्लाइज टेंजेंट टू द पॉइंट ऑफ रिलीज। मेरीगो राउंड में आप बैठते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड ले जाता है, आपको लगेगा फट के बाहर निकल के गिरोगे। समटाइम्स यू मूव अ की चेन लाइक दिस एंड योर ममा कीप्स ऑन टेलिंग यू मत करो लग जाएगा, मत करो लग जाएगा। लगने से कैसे लगेगा? इट वोंट कम इन सर्कल, द मोमेंट यू रिलीज इट, एट दैट मोमेंट इट विल फ्लाई आउट लाइक अ टेंजेंट। हैव यू अंडरस्टूड? ठीक है, so this is the direction of the velocity. So if I ask you, let's say we keep a velocity as say 20 meters per second, इतना का velocity दिया, और p2, तो यहाँ पे if I ask you what is the magnitude of velocity, you will say 20 meters per second, this is velocity v1. If I tell you what is the magnitude of the velocity out here, this is just the magnitude of the vector, you will say sir here also it is 20 meters per second. लेकिन अगर मैं आपको पूछूं is v1 as a vector, that is a velocity, equal to v2 as a vector, you will say no, because for two vectors should be equal, then mag as well as direction should be equal. It's only the mag which is equal. So let us put another way, let us ask now, यहां पे स्पीड कितना है? सर यहां पे स्पीड है 20 meters per second. What is speed? Speed is the magnitude component of the velocity with the direction stripped off. Direction को निकाल दो, whatever is the magnitude is the speed. सर यहां पे स्पीड कितना है? यहां पे भी स्पीड 20 meters per second है। क्या मैं इसे s बोल सकता हूं? इसे s, can I say s2 and s1? Can I say s1 equal to s2? I said yes, you can say s1 equal to s2, you can say s1 equal to s2, but you can't say v1 equal to v2. इससे क्या समझ में आया? इससे एक चीज समझ में आया, that if you have a circular motion, if you have a circular motion, you can have uniform speed. You can have uniform speed, no doubt about that, but you cannot have uniform velocity. Have you understood this much or not? Tell me. Circular motion. What is circular motion? A type of motion in which a body moves around a circular path. So the body should have a circular path. In order to have a circular path, there should be a center of the path. There should be a radius of the path. And the length of the path will always be 2 pi r, which is the circumference. The unique property here is, if a body moves along with the same speed, its direction differs at every point. And once direction differs, velocity differs. Is it correct? So, though you are moving with the same constant speed around this circle, I will not call you uniform velocity. I will call you, your motion is something with uniform speed. Your motion is something with uniform speed, not uniform velocity. Sir, why don't you call it uniform velocity? Then I say, you bhutnikas, at this 2 point, though the speed is same, the velocity is different. And once velocity, though the speed is same, the velocity is different. Why is the velocity different? So the magnitudes are same, but the direction is different. And for velocity to be same, both parameters must be satisfied, mag and direction. Direction is not satisfied. And in a circular path, you will, abhi thoda aur baat karenge isme, you will always find that the direction at a particular point on the circle is the tangent at that point. Tangent at point along the direction of motion. Obviously, you can tell me, sir, the tangent is actually a line like this. On which side should I fly? Common sense, yaar. If you are going this side, body idhar hi to jayega, idhar to nahi jayega. Clear? यहां तक अगर आपको कोई सवाल पूछना है, आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और आगे आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा. ये नया कॉन्सेप्ट है. So, then our question comes, sir, when you were teaching us what you call linear motion, you defined what is called uniform motion. What is uniform motion? A body is said to be in uniform motion if it travels in a straight line and covers equal distances in equal intervals of time, no matter how small the time intervals are. Uniform motion में uniform velocity भी होता है. तो सर सर्कुलर मोशन में क्या कभी भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता है? नहीं होता है. सो in circular motion also we have a term called uniform circular motion.
इन ग्रेड 11 एंड ऑल दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये बोलेगा बेटा हाँ तुमने यूसीएम का प्रॉब्लम किया, यूसीएम मींस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. You'll remember your grandmother in grade 11 when you do problems of this. Uniform circular motion is a motion in which a body is moving in a circular path and covers equal distances in equal intervals of time. बात तो सही है, ये भी तो पॉसिबल है ना. जैसे ये फैन अभी मैंने कितने में 3 के स्पीड में रखा है. On this fan, on one of the blade, I put a small star. That star is moving in uniform circular motion, equal distances in equal intervals of time. लेकिन एक बात है, उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है. यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में स्पीड भी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन क्या है? अ बॉडी ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. So in a straight line, see, get your concepts correct. In a straight line, if you maintain uniform speed, you are obviously maintaining uniform velocity. क्योंकि डायरेक्शन तो आड़ा टेढ़ा हो ही नहीं सकता है, अपन तो सीधे जा रहे हैं. इधर गोलू है, इधर यूनिफॉर्म स्पीड है, पर यूनिफॉर्म डायरेक्शन नहीं है. और यूनिफॉर्म मोशन का क्राइटेरिया क्या है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. क्या यहां हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है. इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल. आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम नहीं है, बट यू देखो ना, अब सोचो जैसे आप यू स्टार्ट क्लॉक को ले लो, घड़ी में सेकंड का कांटा ले लो. इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. इफ इट डजंट कवर तो घड़ी गड़बड़ हो जाएगा. लुक एट द क्लॉक नाउ. लुक एट द सेकंड हैंड्स. सेकंड के हैंड में एक रेड डॉट बिठा दो वहां पे. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट 1 मिनट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, out here what is happening is rotational motion. Out here any point, this is circular motion. ये देखो ये सर्कल में घूम रहा है, and this is uniform. It is covering equal distance. वरना आप बोलोगे सर 4 बजे से 5 बजे के बीच में जल्दी जाता है, 5 से 6 के बीच में स्लो जाता है. सर जब मैं मूवी देखता हूँ ना तब स्लो जाता है, जब पढ़ने बैठता हूँ स्लो जाता है. ऐसा थोड़ी है. यूनिफॉर्म मोशन, बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. So another new thing pops up, and this is what you get as fill in the blanks question. Okay, so this is what you get as a fill in the blanks question at grade 9 level, and people do rattu baji, but you will understand it very nicely. Now see, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? यूनिफॉर्म से सर्कुलर मोशन. ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की खासियत क्या है बेटा? स्पीड इज कांस्टेंट. के मतलब कांस्टेंट, यू नो फ्रॉम अलजेब्रा. हाउएवर velocity is varying. Don't you think? Sir, why is velocity varying? Array direction is varying. So velocity is varying. Agar velocity is varying, whenever velocity changes, somebody is born. Oh, acceleration is born. एक acceleration का तो जन्म हो गया. सर वेलोसिटी का तो वैल्यू चेंज नहीं हुआ, तो क्या हुआ? डायरेक्शन चेंज हुआ है. आई वॉज हियर एट टाइम t इक्वल टू t1. आई वेंट हियर एट टाइम t इक्वल टू t2. t2 minus t1 is some time. In that my velocity changed from v2 from v1. v2 is a different velocity. How much? 20 meter per second. v1 is a different velocity, 20 meter per second. Hey sir, how are you saying 20 different? Array direction different है ना. So both the velocities are different. Are you able to absorb it or not? Weber, able to absorb or not? Okay, I'll repeating again. I'm here at a time t1. I'm here at a time t2. Time elapsed t2 minus t1. What is the time elapsed? t2 minus t1. What is my velocity here? v2. What is the value? 20 meter per second. What is the value of the velocity here? v2. How much? v1. How much? 20 meter per second. Sir, But the direction. So I'm using the vector format of it. If I do v2 minus v1, you'll say sir to 0 ho gaya na. I'm using the vectors. It's vector subtraction. So you will not understand vector subtraction. It means you're not subtracting only 20. You have to take the direction part also. If you take the direction part, then there is a change in velocity. Change in velocity over time is known as acceleration. So a uniform circular motion is an accelerated
motion. This is a big thing children find difficult to absorb. So far in linear, when you studied a linear, uniform linear motion does not have acceleration. यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, उसमें एक्सीलरेशन हो ही नहीं सकता है, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन है. अब एक दूसरा सवाल आता है, सर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, कैन यू बाय नॉइज गिव एन एग्जांपल? यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, सर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड लीनियर मोशन, कैन यू गिव बाय नॉइज? दिस. सर कैन यू गिव यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बाय नॉइज? Uniform circular motion is accelerated, sir. Still you are saying why are you not saying No, speed is constant, direction is same, feeling low uska. This is not something, this is not that, this is not that. Like when a jet engine starts, it starts with a uniform acceleration. It starts, then reach maximum speed. Say suppose your घर का मिक्सी तुम चलाते हो, मिक्सी कैसे चलता है? ऐसे चलता है ना. So initially it starts from rest, there will be acceleration. After that the mixie attains what? 5200 rpm, घूम रहा है. Uniform circular motion, yes, speed constant 5600 rpm. rpm means rotations per minute or revolutions per minute. How about the acceleration? Sir, accelerated motion, क्योंकि उसके अंदर जो सरसों का दाना है वो हर बार अलग अलग डायरेक्शन में छिटकेगा, इसीलिए तो मिक्सर यूज करते हैं हम लोग. How do you ensure that all the mustard seeds kept on the mixie, they all get ground up? जैसे ही तुम चलाओगे वो छिटकेगा साइड में तो वेसल है ना, वेसल फिर बोलेगा जा सेंटर में जा, नहीं छीनना है मुझे, जाओ सेंटर में, तो ऐसे जा जाके वो हो गया उसका. The mixer grinder is this much. So when you put mustard seeds, the mustard seeds must be flying to the side initially. On the side again pushes him. ये चीज समझ में आया? अब एक सवाल आता है, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन आप समझोगे अगले चैप्टर के बाद कि ये एक्सेलरेशन होता क्या है, क्या, बिकॉज इन दिस चैप्टर, इन चैप्टर 1 व्हाट डिड वी स्टडी? वी ओनली स्टडीड फैसेट्स ऑफ मोशन. वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्सेलरेशन. हमने ये नहीं पूछा ये वेलोसिटी क्यों है, हु इज कॉजिंग द वेलोसिटी. ये हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे. चैप्टर 2 इज ऑल अबाउट हु डिड इट. चैप्टर 1 इज ऑल अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज थेफ्ट हैपेंड, Who did the theft? Thief did it. वो thief को हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 में. लेकिन एक और चीज समझेंगे. यहां तक समझ में आया? Did you understand? ठीक है. Now, don't hesitate to ask anything. So the takeaways for you. What are the takeaways? Number 1, uniform circular motion is a motion in which a body. First of all, let's say what is a circular motion. A circular motion is a type of motion in which a body moves around a circular path. A circular path will have a center and will have a radius, and the length of the circular path is given by the circumference, which is 2 pi r. What is uniform circular motion? A body is said to be in uniform circular motion if it covers equal distances in equal intervals of time. Sir, can you give an example? The hands of a clock, the rotating blades of a mixer grinder, the CD drive which you have. CD drive घुसाते ही घूमना शुरू हो जाता है, so and so rpm में घूम रहा है. The pedestal fan, these are all uniform circular motion. They will all be, as long as you are not changing the regulator, they are moving at constant speed. Now next question, sir, what about the velocity? Look, the velocity has got two components, one being the magnitude and one being the direction. While the magnitude remains constant, due to which you say the speed is constant, the direction keeps on changing. Okay sir, how do we know about the direction? At any point where you want to know the direction, draw a tangent and see along the direction of the motion. That is the direction. Any example about it? Sir, take a stone and start whirling it, and if the thread gets cut, the stone doesn't move in a circle. The point at which it got cut, it just flies away tangent at that point. कहने का मतलब कुछ ऐसा है. देखो ये एक रस्सी है, इसको लेके मान लो एक स्टोन को ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हो आप, एंड दिस इज द रेडियस, और यहाँ जाते जाते आपका स्टोन में कट हो गया, तो ये स्टोन कहाँ से छिटकेगा? ऐसे छिटक के चला जाएगा. यही तो डिस्कस थ्रोअर करता है, इसलिए वो बहुत जोर से घूमता है, घूम के फिर फटाक से डिस्कस छोड़ देता है. एंड आफ्टर द डिस्कस गोज, you will always see he has his follow through. That is very important. This you will learn impulse, जैसे हम पढ़ते हैं. A cricket batsman, after the batsman hits the drive, he has to have his follow through. बॉल लेकिन यहाँ लग के कहाँ चला गया है, but you'll see, जैसे लोग बोलते हैं ना स्लाइट अपिश खेलते तो ऐसा follow through ले लेगा. Follow through is very important. Discus thrower अपना follow through लेगा. Everyone, that's impulse. You'll study again in 11. Goalkeeper after catching the ball, wicket keeper after catching the ball, follow through.
नहीं तो चोट लगेगा आपको, ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पे एक बात करते हैं अभी, जब भी आपका सर्कुलर मोशन होता है, नाउ दिस बॉडी इज इन circular motion, and let us say there has to be some force which is keeping it towards the center. There has to be a force. Why sir? अरे नहीं तो ये बॉडी सर्कल में रहेगा ही क्यों, ये बाहर चला जाना चाहिए। सर नहीं समझे, ओके, पहला इजी एग्जांपल लेते हैं, एक थ्रेड से इसको घुमाते हैं, लेट देयर बी अ थ्रेड विथ विच वी आर टाइंग एंड मूविंग इट। थ्रेड को काट देने से ये घूमेगा सर्कल में? नहीं घूमेगा। दैट मीन्स देयर इज सम force towards the center which is keeping, वो यहां जाने से, when the body goes here the force is trying to pull it in this direction, when the body goes here force is trying to pull it this direction. Sir example दीजिए, sun and the earth, nucleus and the electrons which we will study, घूम रहा है, उनके बीच में तो कोई धागा नहीं है। This force which acts towards the center, this force which acts towards the center is known as, यहीं पे ICSE आपसे आगे चला जाता है, is known as centripetal force. Centripetal force will always be there in circular motion, whether the body is tied or the body is not tied. Centripetal force gives a force. What is centripetal force? A force which acts towards the center, a force which acts towards the center and keeps the body in circular motion. Now question is, sir, centripetal force का formula क्या होता है? This anyway we'll go in next chapter, we'll learn. फॉर्मूला क्या होता है? आई सेड आई डोंट नो। अलग अलग फोर्सेस इस फोर्स का रूप लेती है। हाउ टू एक्सप्लेन इट? आई विल से गुड गवर्नेंस ऑफ अ स्टूडेंट। हाउ इज गुड गवर्नेंस inserted or inculcated in a student? Sir, different role players are there. A mother can be a role player, then she is the a good friend, a guru, a mentor, a nice website जहां पे योगा सिखाता है, that can also put you that. So अलग अलग चीजें उसका रूप धारण करता है। The centripetal force, its form is taken by different type of force. So let us give some example. Sir, when the earth is moving around the sun, the gravitational pull of the sun is causing the centripetal force. Sir, when I am having that thread and I am moving a stone like this, the tension of the thread, tension समझते हो? The maximum, whenever tension means what? Let's say you have a thread out here and you have a load. The load will pull it downwards. तब तो फट जाना चाहिए ना रस्सी को. If a body is there with a load L, the load will pull the body downwards. रस्सी टूट जाना चाहिए. आपको नहीं लगता इसका मतलब रस्सी भी ऊपर से कोई एक फोर्स दे रहा है, वरना तो रस्सी टूट जाना चाहिए था. This is known as the tension. And tension is limiting force. Limiting means there is a limit. When you cross the limit of the tension, ठप टूट गया. That's why guitar and all we say there is a particular tension to which ज़्यादा tension दोगे तो फट जाएगा. So the tension is actually the centripetal force. Another example, sir, this is nucleus and this is electron. What is the electrostatic force of attraction between positive and negative? आपने 8 में पढ़ा था ना, opposite charges attract. That forms the centripetal force. Centripetal force तो रहेगा ही रहेगा. कौन है? What is the formula? That will depend upon what type of scenario you are encountering. When we go to the chapter of gravitation, centripetal force will be gravitational force. When we go to the chapter of say rotational dynamics in grade 11, tension force will be there. When we go to atomic level chemistry, modern chemistry and modern physics and atomic chemistry, electrostatic force of attraction. And sir, if this is that beautiful girl and every day I cycle in and around her house, then the teenage attraction or infatuation is the centripetal force. अब शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा. घर यहाँ पे है, बट सर उनके घर के सामने से साइकिल चला के जाएंगे, पता नहीं किसी अगर देख रही है तो, then also you are moving around that girl ना, circular motion. What is causing that? Sir, the teenage pull factor called infatuation. That is the centripetal force. Centripetal force तो है, लेकिन पहचानना पड़ेगा क्या है. आपको कोई नहीं पूछता है. So आपको मैक्सिमम अगर कोई पूछा भी नहीं पूछेगा, what is centripetal force? The force which is responsible to keep a body on a circular orbit or on a circular path as it executes a circular motion is called centripetal force. And this centripetal force is always directed towards the center. ये हमेशा सेंटर की तरफ. जैसे हम यहां गए, सेंटर आओ,
तो देखो गोल नहीं हो जा रहा है. ट्राई एंड थिंक, टेक अ बेडशीट एंड पुट अ थ्रेड ऑल अक्रॉस द बेडशीट. ऐसे ऐसे खींचते जाओ तो बेडशीट गोल होता जाएगा आपका. ट्राइंग टू ब्रिंग इट टू सेंटर, 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 गोल. ये जो डोसा आप घुमाते हो, बेसिकली योर एक्शन इज टू पुल इट टुवर्ड्स द सेंटर. एवरी टाइम यू पुलिंग टुवर्ड्स द सेंटर. समझ में आया? लेकिन जब सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एक और फोर्स भी होता है, मजेदार फोर्स, वो भी देखते हैं. वो और इंटरेस्टिंग फोर्स है. आपको नहीं लगता जब आप ऐसे ऐसे पकड़ के घूमर घूमर नाचते हो, ए छोड़ना मत, छोड़ना मत, डोंट यू फील दैट यू विल बी चिटको फॉलिंग? एंड दैट चिटको फॉलिंग फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस. देयर इज अ फोर्स व्हिच इज एक्टिंग दिस साइड आल्सो, 100% ऐसे. ये फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. There will be a force which will be acting outside. ये एक्चुअली ऐसे नहीं, ये फोर्स ऐसे जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ये आपके 10 में नहीं है, 9 में नहीं है, लेकिन जान के रखो सेंट्रीफ्यूगल. व्हेन यू ट्राई टू टेक अ टर्न, साइकिल में टर्न लिए हो, एवरीवन हैव टू, डोंट यू रिड्यूस योर स्पीड? व्हाट मेक्स यू रिड्यूस योर स्पीड? यू लूज कॉन्फिडेंस बिकॉज यू थिंक इफ आई टर्न एट अ मोर स्पीड, छिटक जाने का डर है. हु इज कॉजिंग दैट छिटक? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. And with this, you can have one beautiful explanation. Take a bucket, that small restaurant wala bucket, and fill it with dal tadka. और इसको जोर से सर्कल में घुमाओ तो बकेट यहां पे ये शेप में आ जाएगा. डोंट यू थिंक? एक ड्रॉप दाल भी नहीं गिरेगा. हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एक्टिंग ना. सेंट्रीफ्यूगल इज थ्रोइंग द दाल आउटसाइड. कुछ भी नहीं गिरेगा. बट धीरे से नहीं घुमाना है. And then nothing will fall. That is centrifugal force. You don't have centrifugal. So that is all about uniform motion that we study. In circular motion. So what is circular motion? Once again, I am repeating everything. A circular motion is a type of motion in which the body executes motion around a circular path. That means it has a center and it has a radius and it also has the length of the circular path. That's called circular motion. What are the unique facets about it? Sir, in circular motion, the body can maintain constant speed, but don't be under the illusion that it is constant velocity because the direction is continuously changing. So velocity can never be constant. Only speed can be constant, and if a speed is constant, then the circular motion is known as uniform circular motion. But sir, you told velocity is not constant. Yes. So despite the fact that it is uniform circular motion, it is an accelerated motion, and there is a force called centripetal force. Centripetal force is the force which is responsible to keep the body in circular orbit, and it acts towards the center of rotation. हमेशा सेंटर में आज ऐसे घुमा रहा है उसको, और वो सर्कल में घूम रहा है. ठीक है? राइट. नाउ सम ऑफ द क्वेश्चंस, थोड़ा सा एक, अगर कभी एक क्वेश्चन आया तो न्यूमेरिकल, तो भी देख लेते हैं कैसा है. नाउ से दिस इज माय सर्कुलर पाथ. मुझे रेडियस ले लो भाई साहब. कितना ले लें? इसको ले लो 7 सेंटीमीटर रेडियस ले लेते हैं इसको. ठीक है? 7 सेंटीमीटर इज द रेडियस. व्हाई डिड आई टेक 7? क्योंकि पाई का प्रॉब्लम है ना, 22/7, उसमें 7 मारा जाएगा. चालाक है सर. ठीक है? 7 सेंटीमीटर, राइट. एंड से द टाइम इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स. ठीक है? 10 सेकेंड्स, राइट. सो we are supposed to calculate, say suppose somebody is asking us, calculate the speed of the vehicle. Speed क्या होता है बेटा? Distance upon what time? Okay. Speed means there's a body here. Speed means in terms of velocity, what are you calculating? Only the magnitude. Speed calculate करना मतलब velocity का magnitude calculate, distance by time. Okay, and say the distance moved by the body. Suppose what is the distance? The distance moved by the body is, in one circle, the distance moved by the body is 2 pi r divided by t. ये करने से आपको मिल जाएगा. समझ में आया? If somebody gives you the time speed, then you can calculate time. You can calculate it. हाँ, नहीं वो तो डिपेंड करेगा. हाँ, टाइम अच्छा इसने डाल दिया. Clear? Understood? So what we do now, I will start writing many parameters of this chapter right from start that we studied. And today is the final revision. You start asking me anything that you have not understood. अब तक एक पूरा रन डाउन करते हैं चैप्टर को. काफी टाइम है हमारे पास. हाफ एन आवर इज मोर देन इनफ. रेडी? सो वी स्टार्ट. ये मिटाओ.
पहले रेडियन वेडियन भी आता था, आजकल नहीं आता, आजकल प्यारे बच्चे हो, कुछ नहीं पूछते। वेरी गुड। और तुम लोग का और कुछ है क्या? एनसीसी, शादी ब्याह? सहस्रा ऑल्सो वेंट विथ यू? सो ऑल बैक, नो इंजुरी, नथिंग? स्लाइड किसको किसको हुआ? कहाँ कहाँ गए थे? मल्ला रेडी और वहीं पे कैंप करके? ओके चलो, क्या हो गया? ये हंस रहे। राइट, charted our chapter with something. Acha, children, Anya and this Yashvi, Anya disappeared. Is it visible to you? I didn't forgot to switch on the light. Is it visible? Yes. Okay, right, fine. So we started our chapter with a discussion on something called rest versus motion. And here we also came across a term. This is for a higher level. Now nobody will ask you in your grade level, called frame of reference. Why the frame of reference comes? Because, sir, no body is permanently at rest. Nothing is permanently at rest. What you feel someone is at rest is because the frame of reference from where you are observing. If I take myself right now as the frame of reference and I see him, he is at rest. But both of us with the frame of reference as sun, we both are in motion. So a body is said to be at rest if its position does not change with respect to time. If its position does not change with respect to time, then the body is said to be at rest. A body is said to be in motion or any fixed object taken as a reference. A body is said to be in motion when its position changes either with time or any fixed object taken as reference. In other words, you're basically trying to say, if with reference to a frame of reference is any coordinate system, right? And you should also have a clock. बस यही होगी आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसके मुताबिक अगर किसी का पोजीशन चेंज हो रहा है तो वो मोशन में है, नहीं हो रहा है तो वो रेस्ट में है। क्लियर? चैप्टर का नाम क्या है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लेटर विल सी यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। मतलब इस चैप्टर में इफ वी हियर अबाउट एक्सिलरेशन, इट शुड हैव वन वैल्यू ओनली, यूनिफॉर्मली। नाउ यू आस्क योरसेल्फ, सम मेनी थिंग्स वी विल सी इन रिविजन। SUVAT, उन्होंने दो वेलोसिटी दिया हमें, लेकिन एक्सिलरेशन एक ही है। सो एक्सिलरेशन इज यूनिफॉर्म। और ये क्यों है? बिकॉज देयर आर टू वेलोसिटीज। मैंने बोला था जब भी वेलोसिटी चेंज होता है तब इसका जन्म होता है। चेंज इन वेलोसिटी एंड टाइम। सो दिस फेलो यू कैन नॉट नेग्लेक्ट। और ये फेलो कहां से जन्म होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। दैट्स व्हाई SUVAT. SUVAT equations are applicable only when body is moving in a straight line with a constant acceleration. सर्कुलर मोशन में ये लगा दिया तो फिर खिड़की से कूद देना, लेकिन अपने घर के, मेरे घर से नहीं। समझ में आया? रेस्ट एंड मोशन। इसके बाद नया नेक्स्ट टॉपिक आपको पूछा गया था, यू आर एक्सप्लेन व्हाट अबाउट यूनिफॉर्म मोशन वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म मोशन. Is this clear with you all? So what is uniform motion? A body is said to be in uniform motion if it travels in a straight line. The first thing should be travels in a straight line. That time you did not understand why they wrote this. See, when you actually define something, I don't say you have to copy the book's definition. आप अपना definition लिखो, but you can't afford to miss the keywords. Keywords are straight line, covers equal distances, equal interval time, no matter how small. Or you can write this sentence now: Stella is supposed to execute uniform motion if Stella runs in a straight track covering equal distance and equal intervals of time, no matter how small the time intervals may be. Full marks. Stella की कोई जरूरत नहीं, आपने उसमें ऐड किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कीवर्ड्स मिस नहीं होना चाहिए। Now you ask yourself, हमने स्ट्रेट लाइन वाली बात क्यों की थी? वरना वेलोसिटी हमारा यूनिफॉर्म नहीं होगा, और वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, जफड़ा हो जाएगा। सो स्ट्रेट लाइन, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंसेस, एंड नो मैटर हाउ स्मॉल. व्हाई डिड वी से? सर, बिटवीन 8 o'clock to 9 o'clock I cover 100 meters. 9 o'clock to 10 o'clock I cover another 100 meters. What is the guarantee between 8 to 8:30 you covered 50 meters? That information is missing. No sir, you said no matter how small, if you make it 30-minute interval then it is 50. Oh, very good. Sir, if it is 15 minutes interval then it is 25. ये रेशियो रहना पड़ेगा. Sir, it is 7.5. Sir, then it is 12.5.
You are actually maintaining that ratio, right? समझ में आया? Otherwise, just imagine, I'm giving you an example. Between 8 o'clock to 10 o'clock, you went 200 kilometers. Between 8 o'clock to 9 o'clock, you must have gone only 50 kilometers. And 9 to 10, you went 150, तो तुमने स्पीड बढ़ाया होगा. अब साउंड से सुनो तुम्हारा कैसे यूनिफॉर्म मोशन होता है. पहले कैसे जा रहे थे? इट इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन का एक ही साउंड आना चाहिए. ऐसे. Now, when you answer questions, think. ये हो गया, ये पढ़ लिया था, right? इसके बाद हमने इंट्रोड्यूस किया था डिस्टेंस. देखो 2 महीना लगा ये चैप्टर पढ़ने में. इसके बाद anyone who studies in grade 11 and opts for physics, and if he or she I get to hear is scoring Dumbo, घर पे आके पीटूंगा. 2 महीना पढ़ाया हूं ये चैप्टर. Wherever you study, just for the reason that your concept should be clear. Distance versus displacement. We gave many examples. Somebody traveling from Delhi to Hyderabad, somebody traveling Delhi Hyderabad via Singapore, somebody going to Jupiter and coming back. So what is distance? Distance is the actual length of the path traveled by a body or traversed by a body. And what is displacement? Shortest straight line path between two destinations, initial and final. Shortest straight line is known as displacement. Displacement का एक और language होता है distance in a specified direction. Whenever you have distance in a specified direction, it has to be the shortest distance. From me to Piyusha, distance in a specified direction. Distance. This distance becomes displacement. It will be the shortest distance. After this, we came across a topic called vectors versus scalars. अरे दीपांशु को तो लग रहा है एकदम जैसे मूवी में होता है ना, सीढ़ी से गिरने के बाद वाला सीन, नेगेटिव नहीं, याद आ रहा है मुझे, हाँ मुझे याद आ रहा है. ये सब नेगेटिव दिख रहा है उसको. इन मूवीज डू यू सी after the person falls from the stair, nahi, there will be a stair, and then all negative scene comes. He say, हाँ ये सब तो था यार, बहुत ही कुछ था. Vectors versus scalars. In physics, quantities are classified either as vectors or scalars. Vectors are the quantities which need both magnitude and direction to be specified completely. Scalars are the units which need only magnitude. Speed is a scalar quantity, temperature is a scalar quantity, pressure is a scalar quantity, force is a vector quantity. Why force है भाई? एक थप्पड़ मारो, कहाँ मारो, लाइट गल पे मारो, किधर मारो, ये हाथ से मारो, कैसे मारो, इतना स्विंग मारो, तो सब डायरेक्शन में. Clear? Also, we studied something about the SI system of units, and we said that there are 7 fundamental SI units. Do you remember them? Anyone? Yes, sir. Try. Yes, we will try. At least you have said, I'm happy. What are the 7 fundamental units? ये भी हमने पढ़ा था. बोलो. हाँ, meters. Meters for length. हाँ. Second for time. Ampere for electricity, electric current. सबसे पहले MLT करो. MLT. M stands for mass. So mass means kilogram. L is length, meters. ठीक है, 2 हो गया. T time, second. After that comes electric current, ampere. Luminous intensity, candela. Temperature, how can you forget that? Kelvin. And then amount of substance, mole. 7 हो गया. Sir, how you remember? You don't remember. What did you say? Then SI units. And when we talk about SI units, we always said like speed and all are in meter per second. And one beautiful thing we saw here is that 1 kilometer per hour is equal to 5/18 meter per second. ये भी याद रखिएगा. कैसे आता है सर? सर 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 3600 सेकेंड. सर 0 ने 0 को मारा, 2 ने 5 को मारा, 18 से मारा, सर 5/18 आ गया. ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर्स पर सेकेंड. ये सब नहीं लेके जाता है तू, अच्छा वाला लेके जाता है. ठीक है, मीटर्स पर सेकंड. क्लियर? ये भी हमने पढ़ लिया था. अनुषा क्या हुआ बेटा, इन्हें ऐसे देख रहे हो जैसे नई बहू ससुराल में जाके ननद और सास को देखती है. हाँ, अभी तो मेरे हाथों के मेहंदी भी नहीं उतरे और आंगन में दीवार खड़ी हो गई. आ जाओ. नंबर 5. व्हाट वाज नंबर 5? कौन बोलेगा? Then we introduced something else. What was that something else? We introduced the concept of speed. What does speed means? Speed is the ratio of distance over time. Scalar quantity, SI unit, meter per second. Then when we introduced speed, we also brought average speed. And you will get problems on average speed. Average speed is Tirumala Devasthanam Darshanam formula
total distance traveled divided by total time taken. ठीक है, एवरेज स्पीड. और एवरेज स्पीड होने के बाद वी सेड वी गेव बाय टू स्पीड. Then also we had things like uniform speed and non-uniform speed. A body is said to be in uniform speed. अभी हम इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेंगे, देखो गौर करो. A body is said to travel with uniform speed because speed है. अब क्या मतलब? It will cover equal distances, equal intervals of time, no matter how small the time intervals may be. The uniform speed. So we don't need the concept of straight line. But when we go for velocity, it will straight line. And that guy had asked a question. So sir, uniform velocity and uniform motion are same? Obviously. यूनिफॉर्म मोशन में हमने बोला था सीधा जाना, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम बोल रहे हैं कि तुम्हारी वेलोसिटी सेम है. इसका मतलब तुम डायरेक्शन चेंज ही नहीं कर रहे हो. देखो दुनिया से घूम फिर के आ रहा है. ठीक है. देन वी आल्सो स्टडीड अबाउट समथिंग कॉल्ड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन के हम ग्राफ्स भी देखते थे. अभी तो आपको ग्राफ समझ में आ जाना चाहिए. अगर ये एसटी ग्राफ है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ अ एसटी ग्राफ टेल मी? मीटर पर सेकंड मींस स्पीड, एंड इट शुड बी कांस्टेंट. इट शुड बी कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट मींस लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट. देखो अभी सब मैरी करो, सब समझ में आ जाएगा. यू डिड नॉट रिमेंबर व्हाट इज द ग्राफ? The graph, ST graph of uniform motion has to be a straight line, because straight line slope is constant, and in uniform motion velocity is constant. I need to read. You need to read the chapters and the videos. You know, don't see those. You just fumble out here. Okay. The next one. After speed, we came to something called velocity. A velocity is a vector quantity which has got both magnitude and directions. Two velocities are said to be equal only when they are equal in both magnitude and direction. 20 meters north and 20 meters north are same velocity. 20 meters north and 20 meters east are same speed but not same velocity. 20 meters south and 30 meters south are velocities in same direction but not same because their magnitudes are different. I understand. Good. So once you have understood velocity, then you also had understood what is uniform velocity and non-uniform velocity. You can marry the same thing with uniform motion. समझ में आया? Good. Then after velocity we brought the concept of acceleration. Acceleration is said to be the change in velocity over change in time. So change in velocity, that means velocity must change. So we brought the concept of final velocity minus initial velocity divided by time. And this is acceleration. This is nothing but your first equation of motion also. V is equal to u plus at. इसी से v equal to u plus at भी आता था. V equal to u plus at. ठीक है ना? ठीक है. एक्सीलरेशन समझ लिया? एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है. टू बिजनेसेस, one Garieb's and one high-ended business, have the same growth rate of 1%. That does not mean after 1 year their money is same. Their growth rate is same. Growth rate is same. So if we try to find their growth rate as a slope, we will find that both the businesses have parallel lines because their slopes will be same. But parallel line का मतलब ये नहीं कि दोनों एक ही जगह एंड करेगा. देखो ये इतना डॉलर पे एंड किया, ये तो गरीब्स है, ये नीचे एंड किया, बट दोनों पैरेलल है, दोनों का ग्रोथ रेट सेम है. समझ में आया? बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है. आप एक्सीलरेशन भी समझ लिए तो आपके सारे पात्र तो आ चुके हैं भाई साहब. T आ गया है, V आ गया है, U आ गया है, S आ गया है, and A आ गया. So time to introduce Amar Akbar Antony, who are the three equations of motion. So equal to U plus AT. What are the formulas? How many of you have done that worksheet that I had sent? एक बार एक worksheet भेजा था, बहुत सारे problems थे उसमें. Oh sir, I forgot. एवरेज वेलोसिटी अच्छा, एवरेज वेलोसिटी भी एक था, अच्छा बात याद दिलाया. एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फाइनल प्लस इनिशियल बाय 2 ओनली व्हेन a इज कांस्टेंट. ये आपको अभी इंपॉर्टेंस फील नहीं आएगा बिकॉज इन ग्रेड 9 a इज ऑलवेज कांस्टेंट. 11 में जाके फटाक से ये फॉर्मूला मत लगा देना, पहले क्वेश्चन को पढ़ना a कांस्टेंट है कि नहीं. अगर a कांस्टेंट नहीं है तो ये फॉर्मूला नहीं लगता है. अंडरस्टूड? एवरेज वेलोसिटी हो गया. वेरी गुड. एवरेज वेलोसिटी मतलब इसे हम v बार से दिखाते हैं. देन कम्स द इक्वेशंस ऑफ मोशंस. v इक्वल टू u प्लस at. देन इसको कैसे प्रूफ करते हैं? हाउ डू वी प्रूव दिस? v is equal to u plus at. Acceleration equal to change in velocity. Why are you turning pages? Look at my face. Acceleration equal to change in velocity by time taken. Acceleration equal to change in velocity by time taken, or eta is equal to v minus u, or v is equal to u plus at. Next derivation we come as
डिस्टेंस कवर्ड इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। नेक्स्ट वाला कैसे डिराइव करता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। अब v के जगह में इनपुट करो, क्या इनपुट करना है? u प्लस ए टी प्लस यू इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व इट, यू विल गेट s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड वाला क्या था? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। सो टेक द सेम इक्वेशन। थर्ड वाला, हाउ टू फाइंड द थर्ड वाला? स्टार्ट विद द सेकंड वाला, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at square, and what do you have to arrive at? v square equal to u square plus 2as. Your question comes, sir, how do I get this? If you observe this, there is no t, मतलब यहाँ से सब t को गायब करना पड़ेगा। t कहाँ से लाओगे? सर यहाँ से लाएंगे d, यहाँ से t लाएंगे, वही d को इधर डाल देंगे, ठीक है? Now in exam you might also have something called, sir I forgot, I wrote v square equal to u square minus 2s। एक खींच के झापड़। Final velocity can all, and when there is acceleration, can always, has to be always more than initial velocity, means it has to be always u square plus something, it cannot be u square minus। अगर आपके पास acceleration है, अच्छा, और एक और चीज तो नहीं बात किया, deceleration retardation, बहुत हंस रहा था ये भी retardation के टाइम में। retardation का मतलब क्या होता है? negative acceleration। In physics, when we do mathematics, we only know one factor: profit, 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 acceleration, acceleration, acceleration. So if there is a negative acceleration, very good, we'll take it negative. If somebody talks about retardation, we take as negative. If somebody talks about deceleration, we take as negative. If somebody takes brakes were applied, we take as acceleration is negative. Vehicle comes to a stop, final velocity equal to 0. A body starts from rest, initial velocity equal to 0, and accelerates. A is positive. समझ में आया? Then we went to the graphs. अब मैं थक गया हूँ और बोलते बोलते। Graphs part. Remember there are three type of graph: ST, VT, AT. In ST graph, in graphs we see only two parameters: area and slope. So if you look at the best way to understand slope is y data by x data. ST graph meter by second, मतलब velocity. AT graph meter per second. Sorry, VT graph meter per second by second, means meter per second square, acceleration. And in AT graph meter per second cube, sir, inconclusive. Come back to area. ST graph meter into second, inconclusive. VT graph meter per second into second, meters, displacement. AT graph meter per second square into second, meter per second, velocity. If you are a straight line, your velocity, your slope is always constant, constant, constant. If you are a sleeping line, slope is 0. Take. Very good. Now वो पेपर है कि नहीं देखता हूँ। एक टाइम पे था तो करते हैं, देखते हैं अगर था, एक टाइम पे था, अभी है कि नहीं नहीं पता। Once upon a time तो है। तो अब बहुत सारा क्वेश्चन पेपर है, इसको लूट लिया तो बहुत कुछ मिल जाएगा तुमको। देखो बहुत क्वेश्चन पेपर है यार। कृतिक, इसको देखने से कुछ याद आता है? यू रिमेम्बर? Yes. ओके, सी विल डू वन क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। देखते हैं। तो यही था हमारा चैप्टर, एक क्वेश्चन करने की सोचते हैं, ठीक है? दिस वाज अ बैच व्हिच वाज रियली गुड, और इस बैच को सब हाई एंडेड क्वेश्चन से ही देता था। दोज डेज इट वाज टू बी ऑल ऑनलाइन एंड पीक कोविड। Okay, they are right now either in grade 12 or some have passed grade 12. Okay, so distance time, right? Now you start. I have not yet said the question. What is this graph? Speed. Wait, distance. Oh, no, my bad. This is a ST graph, ST. distance time graph. This is a ST graph. So area will not give me anything. Slope will give me velocity. ठीक है? आप क्वेश्चन सुनिए। Hi Del, HYD-DEL. Hyderabad Del Indigo flight 605176 is requesting ATC Delhi for landing permission. सुनते जाइए। The pilot, before getting the clearance to descend or running on runway 14 of IGI airport, is making few sorties. अभी भी उसको clearance नहीं मिला है। Sorties means you know, दिल्ली के ऊपर घुमा रहा है आपको।
Explain what is happening. All these are actually part of the question just to mislead you. आप इसी में खो जाते हो, और पता नहीं क्या इंडिगो प्रॉब्लम दे दिया, एटीसी वेटीसी, इससे कुछ लेना देना नहीं है. आप पूरा क्वेश्चन देखो, इसको स्टाइल से पढ़ूंगा तो आपको लगेगा बड़ा हाई फाई क्वेश्चन है. Hyderabad Delhi Indigo Flight 6E5176 is requesting ATC Delhi for a landing permission. The pilot, before getting the clearance from ATC Delhi for descent on runway 14 of IGI airport, is making a few sorties. ये तो कहानी था. Over the skies of NCR, National Capital Region of Delhi. Explain what is occurring between AB, BC and CD. Actually, I just asked what is happening between AB, BC and CD. इसी में बच्चा खो जाता है. You tell me what is happening at AB. What do you feel is happening at AB? First of all, understand this is the graph. What does this graph tell you about? In an ST graph, what does the graph tell me? First, understand what does the graph of an ST graph, what conclusion can you get from an ST graph? An ST conclusions can come only by slope and area. Area does not tell you any damn thing. Only the slope tells you. And if it is slope of an ST graph, then what parameter are you handling? Speed or velocity, whatever it is. You are handling speed. So this portion in AB, you cannot talk any other thing other than speed. Do you understand? और कुछ बात कर सकते हैं हम? नहीं ना. अच्छा. Look at the slope. What about the slope? No, nothing direction. What is the direction? नहीं. अरब सिर्फ slope के बारे में सोचो. और आपको कैसे पता चल रहा है A to B क्या? ये तो ग्राफ है. ओ, आप क्रिकेट में ऐसा कर्व देखते हैं तो समझते हैं क्या ओ अभी जायसवाल इसी साइड दौड़ा था क्या, फिर इस साइड दौड़ा. That is a graph. That does not talk about direction. Sir, that day I saw Ricky Ponting graph this side. That means he was running like this over that. ऐसा नहीं है. A to B सिर्फ स्लोप सोचो. अब सोचो ये स्लोप क्या स्लोप है? वेरी गुड, नेगेटिव स्लोप. दैट मीन्स वेलोसिटी इज what is the slope here? Why negative? Theta is obtuse. Very good. If it is negative, slope यहाँ क्या बोल रहा है? We are in physics students. We are not economic students. The slope will tell us marginal cost. Slope for us is velocity. Velocity is बेटो negative slope का मतलब velocity is decreasing. Negative slope means negative slope means what does slope tell me? You tell me what slope माने क्या है? In this graph, slope means what? You all ना पढ़ा के मजा ही नहीं. इसलिए ये पेपर औकात है ये पेपर करने का. अब मैं इमोशनल ब्लैकमेल. Some children have done this paper. If you think you don't have the औकात, then मैं वो खोल देता हूँ. लक्ष्मी सिंह करते हैं. चलो, आपका स्टैंडर्ड ही नहीं है. स्लोप क्या बताता है इस ग्राफ में? Why are you thinking so heavy? What does slope tell me? Velocity. Just think on velocity terms, nothing more than that. The slope is negative means velocity is negative. Now start thinking what does negative velocity mean? क्या rise, run, direction, ये वो. I told you, now you are a student of physics. For you, slope means graph specific. In this graph, slope means velocity. Bas, that's all. Sir, shall we look about the area? No, you cannot look at on the area. The area is inconclusive. Meter into second क्या area देगा? कोई कुछ नहीं पता चलता है. सिर्फ हमें slope देखना है. ये slope क्या है? Velocity is negative. What does negative velocity mean? ये बोल दिया velocity is decreasing. सब बर्बाद. Velocity is a vector quantity. Negative means, sir, the direction of velocity at that time is opposite to your direction of reference. मतलब flight उल्टी दिशा में चल रही है. It cannot be decreasing. Why are you saying decreasing? What does the slope tell me about velocity? Is the slope, what is the slope? Negative. Agreed. Is the slope constant? Yes. ये फिर बोल रहा है नहीं. It is constant. You are a straight line. A straight line has goddamn constant slope. This angle is same. If the slope is constant, the velocity is constant. Means this aircraft is now moving in the opposite direction with the same velocity. That's the answer I was looking for. ये सॉर्टी मार रहा है ना. ए में आने के बाद उसको कुछ एक बोला होगा, वो बिल्कुल जिस स्पीड में घूम रहा था उसका ऑपोजिट आना शुरू हो गया है. सेम स्पीड में आ रहा है. व्हाट अबाउट बी टू सी? It's at constant velocity. वाह भैया. It's at constant velocity, he is saying. A to B,
The aircraft is like a hummingbird over the same place. What does the slope tell us? Velocity. What is the slope of this line? 0. तो फिर क्यों बोल रहे हो कांस्टेंट है? आप फटाक से आंसर मत दो अंगद, फॉर एवरीवन। सोचो ना, इतना टाइम लेके पढ़ाया हूं आपको, एक बार मेरे लिए तरस खाओ। यहाँ पे वेलोसिटी, आप what is happening, you all only try to fit answers. Don't fit answers. That is the problem with you CBSE children. You are trying to fit answers. Don't fit answers. Try to look what this graph is telling. That is the difference between you and IB children. They are research oriented. वो इसको देख के सोचेगा। आप इसको क्या करते हो पता है? पिछला कोई प्रॉब्लम का आंसर को फिट करने की कोशिश करते हो, भूल जाओ। B to C. I told you. इतना डंडा दिखाने के बाद भी गलती करते हो। What you should see in this graph? You need to see in slang English, God damn, nothing but the slope at every place. See a graph, only two things you'll see, either slope or area. In this graph, area does not make any sense. What was the slope here? Negative, constant. What is the slope here? 0. And what does slope in this graph tell me? Velocity. That means the velocity of this is 0. एक ही जगह पे रुका हुआ है एयरक्राफ्ट। What about here? Negative slope, constant. Straight line माने हमेशा constant. अरे बच्चा बिठा ना यार, एक ही स्पीड में गिरेगा ना बच्चा, डिंगी डिंगी करके थोड़ी गिरेगा बच्चा। Constant. That means velocity is negative. मतलब ये जिस दिशा में जा रहा था, ये उसी दिशा में ही जा रहा है अभी, with the same velocity. But if you compare the velocity here and here, what do you say? Which velocity is more? Again, you all are not studying at home. You should have answered with a simple thing, sir, ये बच्चा और ये बच्चा को देखे ना, तो this बच्चा will fall much more faster. Here the slope is more. So now the aircraft is moving with a much more constant velocity than AB. None of you have practiced a single graph problem either from Lakshmi Singh HOTS. Lakshmi Singh के HOTS में 4 क्वेश्चन है। अगर आपने वो प्रैक्टिस नहीं किया, ये पेपर करने का कोई मतलब नहीं है। Means it is my mistake because you have not done prelims, नहीं खेला है आपने। None of you have practiced. This I can say, I don't need to ask you now, touch your heart and say, none of you have practiced. ऐसा नहीं आप नहीं समझे हो। Those 2 chapters, there is one day when I got angry. That day's recording is not there. If you want that recording, go to IGSC class. They also have motion, and there is, on that same day, they also had a class before you. Same thing. You have missed that video, you see that video. Which video? IGCSE के motion में चले जाना. In a particular Sahasraj class, there is a class of graph. The same thing I taught y'all. After they went, y'all came into my house and I taught y'all. So you can see that video also. But वो video देखे बिना and not practicing Lakshmi Singh level questions, which are preliminary level questions, if I am bringing here, then it is my mistake. मैं आप गलती कर रहा हूँ, आप ये ऐसे भी आंसर नहीं कर पाओ, क्योंकि अभी आपका सोच ही डेवलप नहीं हुआ है. You are still attacking question thinking, हाँ घट रहा है सर, हाँ negative direction, reducing this that. कहानी जो भी रहे, ultimately boils down to 2 factors: slope and area. Look at the slope, look at the area. See what, because they didn't ask you, see in CBSE they'll tell you what is the velocity here. They didn't ask you like that. Comment on the graph here. क्या comment करोगे? फंस जाओगे. यही तो लफड़ा है. I'm giving a small example. One of my student now has come back and asked you in grade 9, any one of you have done bar graphs and all statistics will come in grade 9. So they are not in grade 9, they are in senior grade. You know, their holiday homework, their teacher has given a homework. The thing is to plot bar graph and knowledge of probability. Both chapters in maths you have done. One way of giving you holiday homework is giving you some questions from R.D. Sharma. That is one way of giving, which is expert in CBSE. कर लिया मैंने 2002 का. उसको क्वेश्चन कैसा आया है पता है? बड़ा सुंदर. The Lok Sabha elections are currently underway. Yesterday was the last phase of voting. Okay, draw a line, draw a bar graph to represent the performance of political parties from 2019 and 2014 and 2009 elections. That means what? You have to do research. Immediately question came to me.
सर कैन यू प्लीज हेल्प ऑन दिस, क्यों? क्योंकि ये आर डी शर्मा में नहीं मिलेगा ना. पर इज दिस समथिंग डिफरेंट? नो, you have to go to the internet, search about what happened in 2004 elections. So first the top 4 parties, say Congress, BJP, Janata Dal and all, how much they scored. Everyone का bar graph बनाना है. Similarly, you have to show what happened in 2014. Now since you have data, this asked next is, what is your predictability model of 2004? Who will win the elections? Now this is a probability question. Today if you switch on the news or internet, you will see something running on called exit polls. All the research firm will give their predictions. Nowadays exit polls are so accurate that last year somebody's exact ditto tallied. Do you mean to say that that firm went to every गांव of उत्तर प्रदेश तेलंगाना, भाई साहब आपने किसको वोट दिया, ऐसे डेटा लिया होगा, और वोट किसको दिया तो बोलना नहीं है, that's a secret. That means they must have done some sample survey, and look at their analytical model. It is so strong. Right now if you see, everyone is projecting like, say this party will be winning, BJP will win 330 to 370, almost all the parties. सबने टूल बना, इसी के पैसे मिलते हैं आपको. This is the analyst job. If you want to learn statistics, if you want to learn machine language, if you want to learn AI खाली बोलते हो ना, क्यों आप Netflix चलाने से आप ही के प्रोग्राम आते हैं? Why your type of viewing Insta reels only come as reels to you? ऐसा होता है ना? Why your type of YouTube predictions only come? What is the model working at the back side? Statistical models are working. Unless and until you put, ये सब करना है बेटा. There are different books. Go to the internet. There will be far better way of teaching with graphics and all. Go and say graphs of uniformly accelerated motion. Study that ना. आपके 9 में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. क्या जाता है? आप समझोगे. If you love this topic. Otherwise आंसर करना मुश्किल होगा. अभी ये जैसे आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, इट्स नॉट दैट you don't know what is your problem happening. You know, you are just like the what you call हस्तिनापुर के all princes with द्रोणाचार्य. क्या दिख रहा है सर? पैर दिख रहा है सर. भीम बोलता है फल दिख रहे हैं मुझे. एक ही बच्चा बोलता है मुझे पक्षी का आंख दिख रहा है. वो आपको, आप एटलीस्ट पक्षी तो दिखे आपको पहले, आंख बाद में दिखेगा. राइट नाउ योर aim has to be there, and that will come when you revise. You are revising mathematics. Like in mathematics, the way you come with questions, some point you are not revising this properly. ये cost करेगा आपको बाद में. CBSE आराम से 22 मार्क पेपर, you will score. यूनिट टेस्ट कितना का होगा ये? 7 marks physics. 7 में they'll give you 1 derivation, आप उतार दोगे 5 आ गया, and 2 marks. Sir, I got full marks in physics. How much? 7. Should I say that you know physics? Sir, I got 0 out of 7. Should I say that you don't know physics? No. And who is your competition? ICSE sir, he is appearing 80 mark paper sir. I am appearing only 22 mark. And sir, Cambridge sir 140 marks sir. I am appearing. ठीक है, चलिए पढ़िए इसको. We are meeting on Tuesday, and we are switching back to our normal timing. No one comes in the morning, else you'll be cleaning the corridors out here, right? So, and it